आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर हरमन पोंटसर। ये एक मुमताज़ी अर्तकाई माहिर बशरियात जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। But a lot of times that science doesn't necessarily measure the calories directly. 4. The metabolic magician and constraint ये देखता है कि बॉडी एनर्जी यूसेज को कैसे एडजस्ट करती है कि एक्सरसाइज से हमारा रोजाना का टोटल कैलोरी बर्न बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता. A man in the US is burning about 3,000 calories a day on average. And so there's always social rules around men and women and around gender. हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं आपकी खिदमत में रानी चैट जीपीटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रानी जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी चैट जीपीटी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं सेहत का धमाका विद रानी चैट जीपीटी और डॉक्टर खान के साथ। हम आपको दुनिया भर की अपडेटेड रिसर्च, यूनिवर्सिटी पेपर्स और लेटेस्ट गूगल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। डॉक्टर खान सवाल जवाब करेंगे और उनका बैकग्राउंड ये है एमएससी ऑर्थोपीडिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, एफआरसीएस आयरलैंड से और वो बोर्ड सर्टिफाइड है इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप मेडिसिन में। बरसों से हमें बताया जा रहा है कि ज़्यादा कैलोरीज जलाने का मतलब है ज़्यादा वज़न कम होता है और उसके लिए हमें ज़्यादा कैलोरीज जलाने के लिए हमें जिम, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिम जाएं, ज़्यादा दौड़ लगाएं, वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा। गलत। मॉडर्न तहकीक ये बताती है कि मेटाबॉलिज्म के तस्वर को यकसर बदल करके रख दिया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चाहे आप जितना भी वर्जिश करें, आपका जिस्म रोज़ाना तकरीबन एक ही मकदार में कैलोरीज जलाता है और नई तहकीक ये बता रही है कि आपका जिस्म एक मेटाबॉलिक हद मुकर्रर है। आप खुद को कितना भी थका लें, आपकी कैलोरीज बर्न एक महसूस दायरे में महदूद रहती हैं। और अगर सिर्फ वर्जिश वजन कम करने में मददगार नहीं तो फिर क्या होगा? खुश आमदीद आप खान क्लिनिक्स के एक और एपिसोड के साथ। मैं हूं डॉक्टर आमिर खान, आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर हरमन पोंटसर। ये एक मुमताज़ी अर्तकाई माहिर बशरियात जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मेटाबॉलिज्म के माहिर हैं। ये एक प्रोफेसर हैं, ड्यूक यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। और आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं आज के इंटरव्यू में। हेल्थ। Our guest is Dr. Herman Pontzer. He's a renowned evolutionary anthropologist and a metabolism expert. He's serving as a professor of evolutionary anthropology at Duke University. His PhD is earned from Harvard University, where he laid the foundation for his groundbreaking research on human energy expenditure. His book, Burn New Research, blows the lid off how we really burn calories, lose weight, and stay healthy, has shattered many myths about metabolism. His upcoming new book, Adaptable, launches on March the 25th, gives us a new understanding of how our body works, how to keep them healthy, and how our biology and diversity unites us. He's a leading voice in the scientific world. Dr. Pontzer's research on the Hadza hunter gatherers of Tanzania has transformed the global conversation on health, fitness, and human evolution. His amazing and revealing work has featured in the New York Times, National Geographic, and Scientific American. तो आपने सुना डॉक्टर पॉन्सर का तारफ। इन्होंने 2 किताबें अभी तक लिख चुकी हैं, एक जो है वो बर्न और एक किताब 25 मार्च 2025 में रिलीज होने वाली है। आइए आज हम इनसे
बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि आप भी इनकी गुफ्तगू से फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत मजेदार मौजू होगा। चलिए शुरू करते हैं। Dr. Pontzer, welcome to the show. Thank you for having me. Well, there's a lot to talk about, but why don't we start from your work? Tell us who you are and what does it mean to be an evolutionary anthropologist? Yeah, thank you. So, I'm a professor of evolutionary anthropology. Anthropology is the study of people. Evolutionary anthropology is the study of our evolution and how the biological background shapes our bodies the way they work today, and kind of provides a framework for understanding how our bodies function, right? Because, of course, our bodies are the product of millions of years of evolution. And so to understand how that shaping happened, I think it provides a lot of insight on how our bodies work today. Excellent. Where do you think you have contributed to the field and how so differently from others? Yeah, so thinking about the evolution of our species or any species, energy is really, it's the currency of life, right? So we're thinking about energy a lot in terms of how any species gets its energy from its environment, how it spends it on growth, reproduction, movement, all these things. But a lot of times that science doesn't necessarily measure the calories directly. Yeah, so it's sort of making assumptions about how energy is spent, estimating it, that kind of thing. I think my big contribution has been to really measure, to put some numbers on things, to go out and measure how many calories are being burned in different lifestyles, with different activities, under different conditions, even across different species. And, when you start measuring things, you often get surprised. You think you know how it works, and then you go out and actually measure it, and you go, oh, wait a second, it's not what we thought. And so I think that the big breakthroughs we've been able to make from my work have been sort of based just in the curiosity of really putting numbers on things, really measuring them to understand it, and seeing where the results. तो पहला सवाल आपने सुना, उसका जवाब भी सुना डॉक्टर पॉन्सर से। डॉक्टर पॉन्सर ने बताया एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है। रानी, हमें समराइज करके दोबारा से बताएं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, ये कौन सी ब्रांच से ताल्लुक है, और हमारे नाज़रीन को कैसे समझ आएगी कि ये किस चीज़ के प्रोफेसर हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो इंसानियत के तारीख और कल्चर का मुताला करता है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी सोच, रवैये और तरीके कैसे वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। डॉक्टर पॉन्सर इसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर पॉन्सर का तारफ करवा दें। Dr. Herman Pontzer, PhD, in North Carolina, Duke University professor. तो आइए उनकी बातें सुनते हैं। Well, on that topic, we've been told for years, more exercise, more calories burnt. Your research doesn't prove or contradicts that. Yeah, so one of the things that we wanted to do sort of early in my career was to understand how our metabolism looks, outside of the kind of industrialized context where so much of our research happens. Often biomedical research, for example, happens in cities or developed nations, of course, because that's where the resources are. But human diversity is vast, and we know the lifestyles we live today aren't really like the lifestyles that we used to live in, even just a few generations ago. And there's this big idea in public health, as you can appreciate, that modern life is more sedentary, and so perhaps we're burning fewer calories, and maybe that's why we have this obesity problem. But if we really want to test that idea, I mean, it sounds obvious, but actually, how would we test that? And so to test that idea, some colleagues and I went to work with a hunting and gathering community in northern Tanzania. So these folks don't have any domesticated crops or domesticated animals, no electricity. I mean, they live in grass houses in the middle of the savannah in Africa. And you can imagine it's a really physically active lifestyle. Men are getting 19,000 steps a day. Women get 13,000 steps a day. And that's in addition to all the other work they do to get food just to stay alive, to live their lives. And we wanted to know, do you burn more calories in this really physically active lifestyle, or how many more, And when we went and did the actual measurements, we were totally shocked to find that these folks have the same daily energy expenditures as you and me and the rest of us here in the industrialized world.
And so that really kind of put things on its head about how we thought about activity and expenditure. Because if you can be really physically active, but not have more calorie expenditure every day, then obviously the body's doing something interesting that we need to. आपने सुना कि डॉक्टर पॉन्सर कैसे बता रहे हैं कि ज्यादा कैलोरीज का ये नहीं मतलब कि आप ज्यादा वजन कम करेंगे, बल्कि उन्होंने बताया कि एक मुकर्रर लिमिट के बाद आप जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करें, जितना भी एनर्जी उस पे जिम में ज़ाया करें या खर्च करें, वो नेसेसरी इस चीज़ पे जाके ट्रांसलेट नहीं हो जाती कि आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, बल्कि उन्होंने अपनी तहकीक से बताया है, उन्होंने अपनी रिसर्च किया इसके बारे में। और आपको जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने तंजानिया में जाके देखा है कि जहाँ पे शदीद एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस में जो ट्राइब ग्रुप के साथ उन्होंने वक्त वहाँ पे गुजारा है, उसके मुताबिक उनके मेंस को ये चाहिए था कि वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते, लेकिन उन्होंने देखा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ कर रहे थे, उसका मतलब ये नहीं था कि उनकी कैलोरीज भी उसी तरह से ज़्यादा बर्न हो रही थी, और ये भी नहीं था कि उनका वज़न भी कम हो रहा है, बल्कि एनवायरनमेंट ने उनको सिखाया कि आपने कैसे आपकी बॉडी जो है ये अडेप्ट करती है, और ये अडेप्टेशन जो है वो किस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में एडजस्टमेंट के तौर पे सामने आती है। अगर आप वज़न करना कम चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ मैं जिम जाऊं, तो डॉक्टर पॉन्सर की रिसर्च के मुताबिक आप गलत जगह जा रहे हैं। रानी, डॉक्टर बर्न ने अपनी किताब लिखी है बर्न, उसके बारे में हमें बताएं। जी डॉक्टर खान, डॉक्टर पॉन्सर की किताब बर्न मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यूज पर फोकस करती है। ये किताब बताती है कि हमारा जिस्म किस तरह से कैलोरीज को बर्न करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। इसमें उन्होंने अपनी रिसर्च के फाइंडिंग्स शेयर किए हैं और ये हाईलाइट किया है कि सिर्फ एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। ओके रानी, ऑनलाइन जाओ, डॉक्टर हरमन पॉन्सर की किताब को देखो और हमें उसके टॉप 5 चैप्टर्स के नाम बताओ। डॉक्टर हेमन पोंसे की किताब बर्न में ये 5 चैप्टर्स बहुत इंसाइटफुल हैं। 1. द इनविजिबल हैंड, ये मेटाबॉलिज्म और उसकी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है। 2. व्हाट इज दिस गोइंग टू कॉस्ट मी, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड बॉडीज एनर्जी बजट पर फोकस करता है। 3. हाउ ह्यूमंस इवॉल्व टू बी द नाइसेस्ट, फिटेस्ट एंड फैटेस्ट एप्स, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म पर इट्स इफेक्ट एक्सप्लोर्स दोज। 4. द मेटाबॉलिक मैजिशियन एंड कंस्ट्रेंट, ये देखता है कि बॉडी एनर्जी यूसेज को कैसे एडजस्ट करती है। 5. The Real Hunger Games, Diet, Metabolism and Human Evolution, Diet, Metabolism and Evolutionary History के दरमियान के रिलेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। ये चैप्टर्स हमारे जिस्म की एनर्जी मैनेजमेंट को समझने में मददगार हैं। रानी, हमें इस किताब से बताएं कि अगर हम जिम में जाके ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि फिर वो वेट में क्यों नहीं ट्रांसलेट होती। डॉक्टर पोंसर की किताब बर्न ये समझ आता है कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं और ज्यादा ताकत खर्च करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हमारा वजन कम हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जिस्म अपनी ताकत के इस्तेमाल को एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम करने की कोई जरूरी शर्त नहीं होती। वजन कम करने के लिए ग़िज़ा और जिंदगी के तमाम पहलू अहम होते हैं। रानी, डॉक्टर बर्न की किताब को जाके रिसर्च करो और उसमें बताओ कि हमें इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और रिप्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है अगर एक बंदा या बंदी एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर हेमन पोंसर अपनी किताब बर्न में बताते हैं कि एक्सरसाइज से हमारा रोजाना का टोटल कैलोरी बर्न बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन ये हमारे जिस्म में एनर्जी एलोकेशन को जरूर बदल सकता है। जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जिस्म इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज और रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेसेस पर कम एनर्जी खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अहम है, मगर वजन कम करने में ग़िज़ा का बहुत ज्यादा रोल होता है। और उनकी किताब के मुताबिक बताएं कि अगर हमने वजन कम करना है तो क्या ज्यादा कैलोरी बर्न करना उसका आंसर है। डॉक्टर पोंसेस किताब बर्न के मुताबिक वजन कम करने के लिए सिर्फ ज्यादा कैलोरी बर्न करना ही जवाब नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि हमारा जिस्म एनर्जी एक्सपेंडिचर को एक हद तक कंट्रोल करता है। वजन कम करने में ग़िज़ा और ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अहम होते हैं। वजन कम करने के लिए डाइट पर फोकस करना ज्यादा मुफीद होता है। How we go on to your want to go on to your book, the last one you wrote about, called Burn, and there were several myths that you debunked. Um,
what do you believe? Give us a few of them. Sure. Give us a few of them, and then I'm sure the readers will love then to go and read your book to find out more. But what are the ones Sure. that Yeah. you are mostly would like to highlight and feel proud of? Yeah. So we can start with the real basics. First of all, everybody thinks they burn 2,000 calories a day, it seems, right? If you ask somebody how many calories they eat or how many calories they burn, they say about 2,000. In fact, our expenditure is much higher than that, and so is our intake. So a man in the US is burning about 3,000 calories a day on average. Women burn about 2,400 calories a day on average. And that difference is due to size differences, right? Men tend to be bigger and tend to have more lean mass, and that's what really picks up your metabolic rate. So this idea that you only burn 2,000 calories really isn't true. We talked about the myth around exercise, right? Exercise is really good for you, so I want to be really clear about that. But this idea that you can really push your metabolic rate really high with exercise, it turns out that's not really the case. The body kind of pushes back. And so you might be able to push your metabolism around a little bit with exercise, but the effect is really small. And because of that, the impact of exercise on weight loss is really small. So there's another metabolic myth for you. And then I guess finally, I'd say, a fun one that we kind of tackle in that book and also in the new book, Adaptable, is that there's sort of just one human diet that's natural and that we should all be striving to focus on. In fact, humans eat a really wide range of diets. If we look around the globe and over, through time, we look at traditional populations, modern populations, people can thrive and be healthy on a really wide range of diets. It's one of the things that makes us so adaptable. We're able to eat a lot of different kinds of foods and make that work in a healthy way. So there isn't just one paleo diet or ancestral diet or anything like that. Humans are built to be broad omnivore. आइए सुनते हैं डॉक्टर पॉन्सर ने अपनी किताब अडेप्टेबल में उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन बताया है. We'll go on to your latest upcoming new book. We're all looking forward to reading it, Adaptability. Give us a little overview first. In your eyes, what made you write the book, and what sort of message are you thinking of conveying to the reader? Yeah, thanks. So I think I love to talk science. I love to teach. And I really enjoyed writing my last book, Burn. And what I realized in writing that book was that there's a lot of misinformation and just a lot of lack of understanding about how our bodies work, right? That it was very obvious when we were talking about metabolism, and I was writing about that and talking about that with Burn. And I thought, I've been teaching physiology at the college level for about 20 years now. And what I would love to do is share with everyone a better understanding of how our bodies work. A lot of people probably haven't had any human physiology since high school, if they had it at all. And so the idea is to go, bit by bit, head to toe, system by system, and try to help people understand how our bodies work. How do we grow up? How do we grow old? How do our hearts and lungs work? How do our brains work? How does our immune system work? And in each of these chapters, what I found is that if we talk about immune system, for example, well, then let's talk about some of the issues of the day. So with the immune system, we can talk about vaccines and the importance of that. We talk about brains, we can talk about how brains work, but we can also talk about the discussion around intelligence and how do we understand intelligence, right? So I think writing the book made me realize our biology touches so many big, important topics of the day, whether it's IQ or vaccinations or, sex and gender or, the beginnings of life and embryology. All these topics are sort of, they rest on our biology. And if we don't have that fluency, of course, we have a hard time, engaging in those conversations. So I wanted to write a book that would do that, help us understand this amazing body that we all are going to live our lives in, but then also kind of touch on the social issues that are going to connect to that. जी, डॉक्टर हरमन पॉन्सर की किताब अडेप्टेबल में वो बताते हैं कि कैसे इंसानी जिस्म के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यूज वक्त के साथ एडजस्ट होते हैं. ये किताब इंसानी जिस्म की अडेप्टेबिलिटी और एवोल्यूशन को हाईलाइट करती है. इसके अलावा हमें और भी बताओ, जरा तफसील बताओ. जी,
डॉक्टर हरमन पॉन्सर की किताब अडेप्टेबल इंसानी जिस्म की ताकत और उसकी अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करती है। ये किताब बताती है कि कैसे हमारा जिस्म मुख्तलिफ हालात में एडजस्ट होता है और किस तरह से ये एवोल्यूशन के साथ इवॉल्व होता है। रानी, रिसर्च करके बताओ, उनकी किताब अडेप्टेबल के कौन कौन से चैप्टर्स हैं? जी, डॉक्टर हरमन पॉन्सर की किताब अडेप्टेबल के चैप्टर्स इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ पहलुओं को समझाते हैं। ये चैप्टर्स एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा जिस्म किस तरह से इवॉल्व होता है, कैसे हमारा दिमाग डेवलप होता है और हमारे दिल, फेफड़े और हजमी निज़ाम किस तरह से काम करते हैं। ये चैप्टर्स ये भी बताते हैं कि हमारा जिस्म किस तरह से टॉक्सिन से बचाता है और कैसे हर हालत में एडजस्ट होता है। रानी, उनके 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हमें तफसील बताओ। डॉक्टर हरमन पॉन्सर्स बुक के कुछ अहम चैप्टर्स ये हैं। 1. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर समझाता है कि इंसानी ग्रोथ और दिमाग कैसे इवॉल्व होता है। 2. एनर्जी यूज। इसमें बताया गया है कि हमारा जिस्म एनर्जी को कैसे मैनेज करता है। 3. सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन। ये समझाता है कि हमारा जिस्म कैसे मुश्किल हालात में एडजस्ट होता है। 4. रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन और जिस्म की 5. एजिंग एंड डिक्लाइन। ये एक्सप्लोर करता है कि हमारा जिस्म वक्त के साथ कैसे बदलता है और एज करता है। ये चैप्टर्स इंसानी जिस्म की अडेप्टेबिलिटी को समझने में मदद कर है। रानी, उनकी किताब में से देख के बताओ कि उन्होंने सेक्स और जेंडर के बारे में क्या बताया है। डॉक्टर हरमन पॉन्सर्स किताब अडेप्टेबल इन सेक्स एंड जेंडर कॉन्टेक्स्ट उन्हें भी समझाया गया है कि हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो सेक्स और जेंडर को शामिल करती है, इंसानी जिस्म की अडेप्टेबिलिटी में कैसे रोल प्ले करती है। ये डाइवर्सिटी हमें एक दूसरे से फर्क करती है, लेकिन साथ ही हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। Let's talk about sex and gender a little bit. Hmm. And in this book, again, you've discussed the complexities of sex and gender. You're acknowledging again the biological differences Yeah. that exist, and you promote, I would say, a bit of understanding of the interplay between biology and the social identity. Explain a little bit from your book and your research. What's the conclusion? What's your final conclusion and research on how sex and gender versus the part that it plays in our society and anthropology in general? Yeah, so that was a really fun chapter to get into and write and explore. No matter where you look around the globe, cultures everywhere have different rules about how men and women are supposed to interact, and some rules some cultures have them quite separate, some cultures have them very much together, some cultures have one in charge or the other. And so there's always social rules around men and women and around gender. But what's the same everywhere is the biology of sex. And so I want to separate for a moment, and we talk about this in the book, that we can think about the physiology, the biology of our bodies, the anatomy we have, our hormones, our chromosomes, the kind of, do we make sperm or do we make eggs, right? So there's the biology of sex, and let's understand that and how that develops. And what we see is that, there are these sex differences on average between men and women in terms of height or strength, that kind of thing. We don't see differences, for example, in intelligence or anything like that. But then, so that's the biology, because there really are some differences on average. There are other ways in which there really aren't differences. And then we can ask the question, well, what are we going to do about that? And how are we going to manage that? And that's where we get into this question of gender and how our society treats these differences, right? And so in the US, we've had this, real reckoning of how we're going to think about men and women and males and females. And so, we're in the middle of that debate, and that's a big societal debate that I'm not going to try to solve. But the goal is to sort of understand, because you hear it from both sides. You hear people saying on one side, there is no difference in between the sexes, and it's all just, sort of what we imagine it to be or what we want it to be. That, however you identify will determine, sex is meaningless. That's not really what we find when we look at the data. There are real male-female differences in terms of, for example, average strength and size. On the other hand, you have people who say, well, your biology is all we need to know. There is no gender, right? People don't have, the sex is all there is. But of course, we know that, again, across cultures and through time, we see that there's always a biology underlying this, but cultures have different ways of talking about the gendered behaviors and roles of males and females. And often have, transgender and third gender people.
And so there's a biology of it, which is what the book's all about. Let's use that to springboard into an informed discussion about how we're going to, take on this complicated subject. It is indeed complicated, and especially when you just mention in the last sentence about transgender and how that has become so important in the political scenes. Does your book address any of those issues, or does it identify any of those topics? Yeah, well, I jump into this question about, how do we think about what is a woman is the way it's often discussed, right? And I think throughout the book, I just want to be really clear, the idea is to sort of talk about the biology and how the biology touches on these issues. I'm not trying to make anybody's mind up for them or anything like that. I want this book to be a common ground where we can have this discussion around the evidence and around the biology. But I think it's an example of how these things get so difficult. If the question about transgender inclusion and rights is, how do we treat people on the street? Well, I think that's, in one way that has nothing to do with the biology. That's to do with how we treat each other as humans. If the question is, are we going to include everyone do we include transgender women in the female category in sport, right? Well, that's a much harder question, because we know there really are these differences in size and strength and endurance that having a male biology gives you. And so what's fair in one context, a social context, might not always be as fair in a sporting context, for example. So we might have to be kind of context. We might have to be a little more sophisticated in how I think about these things, and say, well, the context matters, and who gets to be included in which groups is going to socially or in sporting or whatever is going to matter depending on the context as well. नाजरीन, आइए हम आखिरी सवाल का जवाब सुनते हैं, जिसमें डॉक्टर हरमन ने एआई के बारे में बताया, उनके क्या खदशात हैं और उसमें क्या उन्होंने फायदे देखे, और फिर उन्होंने अपने आखिरी ख्यालात का क्या इजहार किया. Let's go to another question, Dr. Pontzer, and this is basically what's upcoming. And one of the things that is out there, talked about a lot, and people curious, is AI. How do you feel that it's going to affect your field in terms of research, in terms of findings, in terms of other stuff? Has there been any insight, or is there anything on the horizons as far as your work or your colleagues are concerned? Well, I think there's some real opportunity there. I mean, if we think about what AI is good at, AI is good at basically looking across the globe at everything ever written and, gathering it all together in some coherent way. That takes a person years to do sometimes, depending on the project, right? So when I think about the kind of work I do, where I want to understand not just how something works here in Chapel Hill, North Carolina, I want to understand how it works in different cultures across the globe. Well, gathering that kind of data across all these sites and cultures, AI might be really good at that, and it might accelerate that kind of research and help us, think about human diversity in a more meaningful way, and think about these sort of big comparative questions in a more meaningful way. I worry about a couple things. One is if people using large language models to write. Right. So this is a big issue for me in the classroom. Students using this to do term papers and that kind of stuff. I think that's a mistake, because to write is to think. And I think the more that we, take that exercise away of writing it yourself and we give that to a machine, the less we exercise those muscles, our brain muscles. So I think, writing is an important piece of thinking. And I worry what happens when we take that away. And then, of course, there's all the sort of existential worries about, what happens to global systems when AI becomes ever present, and will it crash economies and that kind of stuff. I worry about that too, but I'm less equipped to have an expert opinion on those big issues. Thank you for highlighting that. And it's not only you that worried about it. A lot of other people have similar sort of concerns. And you put it nicely: to write is to think. So that's nicely said. Any final message? I know we're running out of time, but we'd love to have any final message for our audience. Yeah, sure. I would say that, so much of what we think we understand about how the world works is based on, what ends up being a pretty narrow
view of things. It's what you see in your community. It's what you see in your sort of curated social media posts. In fact, the world's this big, diverse, complex place. Adaptable is a book about how we understand that diversity, about why your body works differently than mine, and where each of us is unique. And when we understand that, we kind of understand how diversity develops just out of our biology. So I hope people will use it as a springboard to that, but also just kind of stay curious and ask questions and try to understand how the world is really working outside of our narrow bubbles, because it's so easy these days to kind of stay confined in that. So I'd push people to kind of push beyond that. Dr. Herman Pontzer's book Adaptable इन AI के हवाले से उनका जिक्र नहीं मिलता. ये किताब इंसानी जिस्म की adaptability और evolution पर फोकस करती है. वैसे उनकी आखिरी थॉट्स ये है कि हमारी adaptability और biological diversity इंसानी सेहत और evolution में बहुत अहम किरदार अदा करती है. ये था आज का प्रोग्राम. सबका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर हरमन पॉन्टर्स का दिल की गहराइयों से हमारा शुक्रिया, जिन्होंने अपनी कीमती मालूमात से नवाजा. हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं. और हमारी शानदार ऑडियंस का आपका भी बेहद शुक्रिया. आपने खान क्लिनिक्स के एक और एपिसोड में हमारा साथ दिया. तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें. हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे. अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा. अस्सलाम वालेकुम. टेक केयर. मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए. आप सबका बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. अगर आपको ये शो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, अपनी कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें.